कौटिल्य पंडित, आप सभी इनसे परिचित हैं। अगर मैं इनका परिचय देने लगूं तो एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। बस मैं कुछ शब्दों में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इनका परिचय देना अर्थात सूरज के सामने दिया जलाने जैसा है। आप सभी ने इनको टीवी पर देखा है, यूट्यूब पर देखा है, करोड़ों इनके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों इनको दुआएं देते हैं। और मैं तो कई बार पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि कौटिल्य जो है किसी साइंटिस्ट का या फिर किसी विद्वान का रीबर्थ है। पिछले जन्म के अंदर कौटिल्य या तो कोई साइंटिस्ट होगा, तो इसीलिए कौटिल्य का देश विदेश में नाम है। हजारों जगह से इनके निमंत्रण है, हजारों जगह से। अगर साल में एक दिन इनके लिए निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देश विदेश कितनी जगह से इनके निमंत्रण आते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। तो अभी जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। मैं कौटिल्य को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कौटिल्य, आप मंच पर आएं और ये सभी आपको सुनने के लिए बेकरार हैं। आप इन सभी को अपने विचारों से लाभान्वित करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। So first of all, I'd like to thank the amazing people who've actually gathered in this gathering, and I never thought that I'll get such an auspicious chance to be a part with hundreds of my friends. So first of all, I'd like to thank the great management of Satyanand Public School, our magnificent principal sir, and a great MC of today. I was like really fascinated by such a great person. I've never seen such a great anchor, such a great MC in any function. So it's my honor that I'm actually being with sir, and of course my dear sisters and brothers. So it itself is a great moment. गलती होगी, अंकल आंटी का नाम लेना भूल गया। ओके, अंकल आंटी जी आप बहुत अच्छे, एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। देखो आपके बिना क्या है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार ना हो तो क्या है। सो वन थिंग आई लाइक टू से, जितना इन्होंने कहा ना उतना कुछ नहीं है, बिकॉज सभी कोई बुलाते हैं तो पीपल ट्राई टू एग्जैजरेट अ बिट। वन थिंग आई लाइक टू से इन द स्टार्टिंग दैट आई एम your young, किसी का मैं छोटा भाई हूँ यहाँ पर, I'm somebody's younger brother, some elder one, and the things are like that. If you try to do something different at your own, if you get proper guidance and proper platforms, you become different, and you can all become, and there's no something different in it. It's just a way, and if you actually find it and discover it, you are the next person. And itself, one thing I'd like to even add, that currently I'm a student, I'm a learner. मैं 10th class के अंदर हूँ, मेरी थोड़ी दिक्कत है, I'm 13 years old. कई सोच रहे होंगे, because I'm seeing that students, my friends are really excited. Many people would be thinking that I'm a different person, maybe I'm an alien. Okay, I'm not that. And I'd like to say this, कि मेरे को भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, एंड एवरीबडी हैज़ सम प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स आर विद एवरीबडी. मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है, यार होमवर्क नहीं हुआ, काश मैम नहीं आए आज, है ना, ऐसा लगता है. एंड इट्स विद एवरीबडी, सो प्लीज़ डोंट फील समथिंग काइंड ऑफ डिफरेंट है. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन माई सोशल मीडिया, एंड मेरी मम्मा ने बताया कि एक बच्चा, there's one kid from who is actually writing that you are coming to my school, I'm from Satyanand school. तो वो बच्चा कहाँ, एक बार प्लीज खड़ा हो जाए, क्योंकि I was really fascinated जितना उसने मेरे को प्यार दिया, मेरे को एक बड़े भाई की तरह. एंड कहाँ है, दिख नहीं रहा. What's the name of that kid, brother? नहीं, उसने मेरे को बहुत सारे मैसेजेस करे, and I was like really fascinated. किसी ने करे होंगे.
And I don't know the name, that's all, that's the beauty. I don't know the person, but that my dear friend was so great. अभी maybe वो यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ. So एक बार उसके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि जितना मतलब जाते, I have been to various places, I have been to a lot number of places, but the feeling, the vibration, the decorum, the aura that I feel in this place is really auspicious. And that moment, when you get to know that you're getting a quatch from the people, the quatch of love, the quatch of blessings itself, it's a great moment of love and pride. And that is what I think here. Coming here itself is something, it feels something different. You visit a lot of places, you meet different people, but when you meet people who are like you, who are maybe कोई आपके जैसा है, कोई आपके यहाँ पर जैसे मेरे कोई अंकल हैं, आंटियाँ हैं, और एक बात बताऊँ तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन गोहाना लिखा है. हाँ, मैं गोहाना में ऑफिशियली फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है. मेरी मौसी जी रहती है एक छोटा सा गांव है रबड़ा, वहाँ रहती है, तो मैं आता रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. और हाँ, it would be a great moment for me. So I am really feeling blessed to come here. And coming back to the topic, so this was just an informal stuff, but I think that there's one reason due to which I think that the great management and the great sir has called me here. It's not to exaggerate about myself. It's not just to tell about myself, my some good, some bad, but one of the most important things that can actually happen is how can my hundreds of friends who are actually the next Einsteins, Newtons and Kalams, how can you become the persons who will do something different in history, who will carve yourself in history, because you actually have the potential. आप ही हैं. You can see yourself as the future creators, as the future leaders. If you think yourself in that way, then I think your first step towards your goal, towards your achievement would be taken. तो सबसे पहले identify yourself what you are. There's a reason why you're here. You are different. आप अलग हैं. अगर अभी सर ने मेरे बारे में बताया and I am your much, कई यहाँ पर ऐसे जिनका IQ मेरे से बहुत ज़्यादा है, कई यहाँ पर ऐसे जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले, बट they're really great. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं. बस अपने आप पर बिलीव करो, अपने बारे में सोचो that what you are. If you know what you are, then you can be what you want to be. And if you actually take your first step, which is to create a proper thought in your mind. If a proper thought in your mind gets created, then it will always help for the rest of your lifetime. Because thoughts are converted into ideas, ideas are converted into plans, plans are converted into applications, and when an application meets a proper guidance with platforms and a hell number of efforts, lot of hours, and of course a lot of labor, then one thing or any kind of goal you can see is achieved. To achieve that goal, to achieve what you want to be, you need to create your first step, and that is to identify yourself. If you identify yourself, then I don't think that there are a lot of problems that you'll face. तो इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद में रखना है, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं. और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि you are different. Identify it. Think. एक चीज़ होनी चाहिए. मैं एक सवाल अपने जितने भी यहाँ पर मेरे से बड़े हैं उन सभी से पूछना चाहूँगा कि क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी क्यों ना, why shouldn't he do something different? Why shouldn't he be a world leader? Why shouldn't he be the next IAS, doctor, or why shouldn't he be the next innovator? आप किसी भी बड़े आदमी की, if you think about Dr. APJ Abdul Kalam sir, तो आप उनकी छवि उनके अंदर क्यों देखते हैं? Why can't you imagine that my kid can be that? आप ये क्यों नहीं सोचते? आप उनकी इमेज उन्हीं के अंदर देखती हैं, लेकिन अगर आप उनकी इमेज इन
बच्चों के अंदर देखोगे तो ये वो अचीव कर लेंगे, बिकॉज दे हैव द इनर पोटेंशियल, दे हैव द पावर, दे हैव द कॉन्फिडेंस, दे हैव प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन एंड एवरीथिंग नीडेड फॉर अचीविंग दैट. It's just your temperament, it's just your love and guidance for them. So if you actually think, अगर आप अभी अगर मैं यहाँ पर आया, सर ने मेरे बारे में 10 चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोली, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ 10-15 चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोली, इतना नहीं है, 10-15 चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोली. अब आप सोचोगे अरे नहीं यार, मेरा भी लड़का ना इसी की उम्र का है यार, उसको तो साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, हाउ कैन ही बी, there's such kind of problem. और अगर if I speak for 30-40 minutes and और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आपको ये चीज़ आप इसको भूल जाते हैं, especially for my friends, तो I don't think that there's nothing beneficial of my visit coming here and interacting with you all. एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर the reason that I'm here is to tell you that you are much more than what you think you are now, because you have the inner potential, you have everything needed for success, for any kind of achievement. और एक और चीज़ I'd like to add upon, एक temperament, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, और उन्हीं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि there's always a way to study. And I'll be actually trying to, अच्छा अब माइक की आवाज़ अच्छी आ रही है, so I'll be actually try to give that thing that is really needed. And many people ask me whenever I go that how to remember things for a long time, how to be good in studies. So there's no such kind of secret, there's no secret potion. It's just understand stuff, never try to cram. If you enrich your concept, if you make yourself good at the concept level, if you have a clear basic vision and understanding, then things would become very, very easy for you. And you need not to worry for just small things. Because you need just to imagine कि जो मेरा syllabus है वो कौन सा rocket science है जो मैं नहीं कर पाऊंगा. That's very easy for you. आप तो उससे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. बस आपको ये समझना होगा कि अगर मैं चीज़ों का concept करूं, if I try to clarify my concept to a good level, then I'll achieve what I want to be. Then I can easily score very well. And marks or score is not your goal. It should not be your goal at all. Your goal should be to get a vision, to get a thought. One thing is really needed. एक चीज़ जो कि मेरे को लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छी करी है, वैसे बाकी चीज़ें तो आई एम गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी. और एक चीज़ आई वाज एक्चुअली वंस सर्फिंग ऑन नेट, आई वाज ब्राउजिंग ऑन नेट एंड आई गॉट इट, और उसको मैं अप्लाई करता हूँ. अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचना है, एंड इफ़ यू वांट टू गेट गुड आइडियाज़, तो आप दिन के अंदर आपके पास 20-25 मिनट तो हमेशा फ्री होते ही हैं. तो घर जाके फ्री होके 20-25 मिनट रेस्ट करके आप एक काम करना. यू हैव टू थिंक. आप सोचना किसी भी चीज़ के बारे में, आपकी 99% ऑफ इश्यूज वुड बी क्लैरिफाइड ऑटोमेटिकली. आप सोचने को टाइम दो, आप अपने आप को टाइम दो. और जो 6 से बड़े हैं स्पेशली, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. 20-25 मिनट किसी भी चीज़ के बारे में, वेदर इट इज़ मीनिंगलेस, सोचो. क्योंकि आपका ब्रेन जब कुछ गलत एज्यूम करके चलता है, then they create history. All of the great scientists, they take wrong assumptions. And the reason that they are taking wrong assumptions is to reach the right destination. Right destination is not a spontaneous process. And to achieve your right path, to achieve your right destination, one thing is needed, and that is a right temperament. And that right temperament can come when you think. तो आज मेरा थोड़ा गला खराब है, वो वैसे भी बता देता हूँ, क्योंकि कल दीदी का बर्थडे था तो चिल्लाना पड़ा बहुत ज़्यादा. बच्चे मान नहीं रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मे बी ड्यू टू दैट देयर सम प्रॉब्लम. बट टू
to get back on the point, one thing is really needed, and that is to believe in yourself. And belief system is a thing that I think sir might have told you tens and hundreds of times. Because if you actually know what you are, if you actually know that what you can do, then it will always help you for your entire lifetime. And one thing is really needed for your entire path, and that is to be something, to do something different. And that difference is only and only dependent on you, your vision, your thoughts. When you think just a bit different, then you create your right and own path. There are some kind of pedagogy and hierarchical system. Not hierarchical, not patriarchal, but there's some kind of thoughts that always pass on. Is that if I don't study for 10 or 11 hours, I won't do that. I won't be the topper of my class, or I won't crack what I'm planning to. ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. It is dependent on you. If I give the example of this year's NEET topper, he used to study 4 to 5 hours a day. That is not much compared to the genuine and conventional toppers. And he worked on with his different ways. So if you work on with your different ways, if you think something different, if you try to find out the way on your own, then I think that something can become, then you can create history at your own pace. Your own pace, your own vision, and your own methodology is what fits for you. Because you are different. The difference in you is dependent on your thoughts. If you think a bit different, then you'll become different. And one thing that you need to, I think that I need to share it, is that one word can actually change your life. And that word is why. If you actually look on this word, this is a meaningless 3 letters word, but it means a lot. Whenever you make a decision, whenever you think that how I will study, whenever you think that this is I'm going to do, and then you need to look at it, okay, why I'm doing it, or I'm doing it but how, why, and all of these things will always clarify your doubts automatically. Because your right path, your right motivation comes from inside you. अगर मैं भी 10 मिनट बोल के चला जाऊं, तो I don't think that you'll get motivated. सर डेली बोलते हैं, कभी बच्चे उनसे भी नहीं होते, क्योंकि वो तभी होगे जब आप खुद सोचोगे. When you think yourself that this is what I'm going to do, when you think yourself that this is my right path, then you can achieve it. And with this, I'd like to end, and here it's me, Kautilya Pandit, signing off. And I'd like to add some of other words before ending my speech sort of stuff, is that the reason that you all can do something is the reason that you're God gifted. Many people say to me, and when I try to say that you can be better than me, you can be much more than any other person, you can be the next different creators, you can be the next innovators, next creators, then a common impression that is in, I think, everybody's mind, every parent's and every student's mind, is that those people are God gifted. Those people are born with a difference. But this is not at all true. Because every single person is God gifted. You are here for a special cause. आप सभी एक दूसरे से अलग हैं, आप सभी एक दूसरे से अच्छे हैं. You are better than him and he is also better than you at some other task. And you all are here for creating a different stuff. You will be impacting humanity in every single task. There would always be an impact of yours. It's dependent on your thoughts, on your vision, that how much would that impact be. But there, of course, it would be a great impact. And you're also creating an impact now. And to create that impact, you need to know that you are different and you are God gifted. Because
there is nobody who is God gifted, who is not God gifted. Because one thing is always in that everybody has something different in his own. Somebody has a talent in a particular field. Somebody is a good cricketer, somebody likes to jingle with music, dance, academics, sports, and any other thing. So it is your right own path, it is your temperament, it's your vision. It's dependent on your next steps. If you think right, that what I'm going to do after 5 years, what I'm going to be after 5 or 10 years, then I think that you'll get your right path, your right destination, your right vision. And बहुत सारे doubts होते हैं, and I don't think that I can clarify all of them. So you can actually connect me, you can actually be connected with me on social media, on my YouTube channel Google by Kautilya, and I try to answer the things, because I think there would be a lot of questions, and I also will answer it here, but जिनके रह जाएंगे आप मेरे से वहाँ पूछ सकते हैं. And another thing I'd like to tell before commencing my words is that you are just not only different, but your parents are different. Because वो आपके लिए जो सोचते हैं, वो आपके लिए जो vision रखते हैं, वो सबसे बड़ा है. If you identify that these person, my parents, they have a right vision for me, and if you move according to them, according to your teachers, and also according to your well-wishers, then I think that would be best for you. Though your specialities, your goals are always within you. It's not compulsory that somebody else would decide your career or your future. But of course, their guidance, their words would matter a lot till the next period of your life. So thank you everybody, and again I'd like to thank every single person who did this. Or before concluding, and now it's my final conclusion, so I'd like to actually give some lines. I'd like to tell and recite some of the greatest poems and artistic works of Shri Ramdhari Singh Dinkar ji. And जब कौरव और पांडव के बीच में, आप सभी ने महाभारत तो देखी थी, तो जब पांडव अज्ञातवास के अंदर होते हैं और जब कृष्ण जी कौरवों की सभा के अंदर पांडवों का पक्ष रखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जितना भी सिनेरियो है, I'd like to express it with the words of Shri Ramdhari Singh Dinkar. And well, though it is a poem, but the words inside it, the moments and the feel inside it is what makes it different. That is what is the real crux of the methodology and your temperament. If you understand that, then I think that most of the problems would be clarified on your own. तो रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का कुछ अंश मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर. सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बुचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए. क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे. और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला. और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है. और हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, और डगमग डगमग दिग्गज डोले. भगवान कुपित होकर बोले कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे. और भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल
यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण और मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। और अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। और सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। और जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। और पड़ जाती मेरी दृष्टि धर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। और मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। और बांधने मुझे तो आया है, कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। और यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। और सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और अब श्री कृष्ण जी की अंतिम चेतावनी कि हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। और टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। और फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। और दुर्योधन रण ऐसा होगा कि कभी नहीं जैसा होगा। और भाई पर भाई टूटेंगे, विष बूंद बाण से छूटेंगे। और वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मर्ज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। और यह सब होने के बाद थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। Though I think I've said a lot of words, but I think that these words are meaningless when you don't know the crux of the topic, when you don't know the crux that what I'm saying. The reason that I tried to rate such a beautiful masterpiece was the in-depth and indirect analogy that was there in it. If you try to find it, then I think my visit and my interaction is successful, and the efforts by sir and everybody is really, really great. So with this, I'd like to again thank every single person who actually made this program really great, and who made me possible to interact with such great people. And of course, I would like to interact with my dear friends also, and my such great beautiful friends who have actually given a lot of impact. And I've been seeing the students and a lot of kids have been here, and they're actually waiting for their performances. They're waiting for the result of their a lot of hard work in such a short period of time. And of course, my dear uncles and aunties. So again, I'd like to thank all of you, and with this, I'd like to end. Special thanks, Kautilya. One thing I would like to tell you, they all were waiting for you eagerly, but one student has shown this on social media by the words, but from the feelings, from the heart, they all were waiting for you. So a special thanks for Kautilya. और Kautilya, मैं आपके बारे में 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि परमात्मा के बच्चे तो हैं सभी, क्योंकि मुझे लगता है कि कौटिल्य पर परमात्मा की स्पेशल छत्र छाया है। परमात्मा के बच्चे तो हैं सभी, लेकिन परमात्मा प्यार में पलता है कोई कोई। परमात्मा के बच्चे तो हैं सभी, लेकिन परमात्मा प्यार में पलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सभी करते हैं, आदर्शों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उन आदर्शों पर चलता है कोई कोई, उन आदर्शों पर चलता है कोई कोई। और उन्हीं में से एक हमारे प्यारे भाई कौटिल्य हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लगता ही नहीं हमने ऑफिशियल बुलाया है, हमें ऐसा लगता है हमारा छोटा भाई है, कभी भी बुला लेंगे आगे भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कौटिल्य। और अभी कुछ कल्चरल है कौटिल्य, उसके बाद हम आगे के कार्यक्रम को, तो स्पेशल थैंक्स एक बार सभी जोरदार करतल ध्वनि से कौटिल्य का शुक्रिया करते हैं।